Good evening, sir. Okay. So we're starting. So yesterday, what we discussed? Okay, we've discussed three important things yesterday. So if we have an amplifier, operational amplifier, so this is minus, this minus terminal, plus terminal. Okay, we have input and we have output. So yesterday we discussed that operational amplifier basically senses the difference between non-inverting and inverting terminals. Okay, so this is non-terminal. So suppose I'm applying here V plus and V minus. Okay, so if V plus minus V minus is equal to VD. Okay, so my operational amplifier amplify this difference. Okay, and we know the open loop gain. Open loop gain is given by, or V naught output is given by open loop gain into V plus minus V minus terminal. Okay, and this is equal to AOL VD. Okay, so this is your open loop gain. Okay, so this is the way open loop gain is defined. Open loop gain means output upon VD difference. Okay, difference of these things. सर हाँ सर थोड़ा नेटवर्क इशू था सर, ये इधर ही से स्टार्ट हुआ है सर. इधर से स्टार्ट हुआ है. Okay, ओके सर, ओके सर. so this is my two input terminals, output terminals. Okay, power supply, and if I give some difference in voltage to the inputs, okay, my operation amplifier will amplify. Okay, and this is the way we define open loop gain. Okay, now yesterday also we discussed if my open loop gain is infinite in the case of ideal op-amp. Okay, so infinite open loop gain. Okay, infinite हो जाएगा. That means was VD is 0. So this implies, okay, VD is 0. That is V plus equal to V minus. Okay, तो दोनों टर्मिनल अगर इनफाइनाइट है तो दोनों टर्मिनल्स पे क्या हो जाएगा, ये आपका V plus equal to V minus हो जाएगा. सिग्नल पे दोनों पे बिल्कुल बराबर हो जाएगा. Okay, and then we have seen if input resistance is infinite. Okay, this says that I plus इक्वल टू I माइनस इक्वल्स टू 0. अगर यहाँ पर इन रेजिस्टेंस जो है, इधर जो इनपुट रेजिस्टेंस है आइडियल के केस में that is infinite. That is infinite. If it is infinite, no current will flow. That means here microampere current will be flowing. Okay, so that we can take as a 0. So these are the two important characteristics of a op-amp. Okay, that V minus equal to V plus in ideal case only. Okay, and these currents are 0. Okay, this we have discussed yesterday. And one more important property which तो ये दो चीज तो आदमी कल डिस्कस किया था ना कि रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है तो करंट 0 जाएगा और प्लस इक्वल्स टू माइनस होगा. हाँ, ये तो कल डिस्कस किया था. ठीक है ना. एंड वन मोर प्रॉपर्टी वी डिस्कस यस्टरडे, वो क्या थी? सैचुरेबल प्रॉपर्टी. दैट मींस योर V आउटपुट कैन नॉट एक्सीड योर पावर सप्लाई. ओके, सो जो V आउटपुट होगा उसकी वैल्यू हमेशा माइनस VCC से VCC के बीच ही होगी. ओके, सो ये तीन थिंग हमने डिस्कस करी. ओके, नंबर 1, दिस इज नंबर 2 एंड नंबर 3, एंड द फॉर्मूला ऑफ open loop gain. Open loop gain define is like this one, V plus minus V minus. Okay, so ये चार चीज आपको पता है. ठीक है सर, लेफ्ट हैंड साइड वाला भी रब मत करना सर. हाँ. Okay, and then yesterday we started that since open loop gain is very high. Okay, so what we do? Okay, we give negative feedback. So negative feedback से क्या होता है, आपका open loop gain, आपका जो गेन है क्लोज लूप जो गेन हो जाता है एम्पलीफायर का, वो बहुत रिड्यूस हो जाता है. ओके, सो वी हैव सीन नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स. नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स.
सो नेगेटिव फीडबैक सर्किट्स में सबसे पहले हमने देखा था कल, नंबर 1 इन्वर्टिंग एम्पलीफायर्स, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, सो उसके लिए हमने क्या किया था, वी हैव व्हाट टू डन, वी हैव गिवन हियर कनेक्ट कर दिया। एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया था यहाँ से। ओके, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था R1, ओके, एंड देन वी हैव गिवन, इसको तो हटा दो, अंडरस्टूड है, एंड देन वी हैव गिवन वन फीडबैक रेजिस्टेंस RF, okay, this is V output, and we have given input to negative terminal, and this was grounded. This was our inverting amplifier. So now inverting amplifier में we have discussed yesterday that the voltage gain V output is given by कितना था, minus RF upon R1 V input. Okay, that means voltage gain, that is closed loop gain. अभी ये closed loop है, जो पहले निकाल रहे थे that is open loop gain, this is closed loop gain, and closed loop gain is defined by V naught upon V input. Okay, that is minus RF upon R1. और open loop gain कैसे डिफाइन होता है, that is V naught upon V difference, V difference signals. Okay, that difference you should understand. So yesterday we have defined this formula, closed loop gain formula, but this formula is valid only when your a closed loop gain, open loop gain is infinite. Okay, ये तभी के लिए वैलिड है जब ओपन लूप गेन इज इनफाइनाइट, वैलिड ओनली फॉर ओपन लूप गेन इनफाइनाइट, क्योंकि ओपन लूप होते ही ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और कल हमने इनको बराबर लेके किया था, हमने जीरो करके ही हमने फॉर्मूला निकाला था, ये कल याद है कि नहीं याद है? Yesterday when we have derived this formula, that time we assume that this is zero, and by assuming this one we have derived this formula. Okay, now what happens if this open loop gain is not infinite? Sir, बच्चा आई नहीं आया, ठीक है। So now suppose if this open loop gain is not infinite, okay, so now second condition, okay, if open loop gain is finite, okay, otherwise op amp is ideal. अब नया केस ले रहे हैं कि हम लोग कि तो ओपन लूप गेन इनफाइनाइट मतलब ये आ रहा है इनफाइनाइट ना? ओपन लूप गेन तो कैसे बताया था, क्या कैसे डिफाइन किया था? V आउटपुट अपॉन V डिफरेंस। हाँ सर। ओके, तो अगर वो फाइनाइट है, वो इनफाइनाइट नहीं दे रखा है, तब आपका क्लोज लूप गेन कितना आएगा, कैसे डिफाइन करेंगे? सो विल सी द फॉर्मूला फॉर नाउ, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर क्लोज लूप गेन। सो ओपन लूप गेन इज फाइनाइट, अदरवाइज ओप एम्प इज आइडियल। इसका मतलब क्या है, हम करंट तो जीरो ही लेंगे क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई होता है, ठीक है, रियलिटी में, और क्लोज लूप गेन भी फाइनाइट इनफाइनाइट मतलब हाई होता है, फाइनाइट होता है, ठीक है, इतना इनफाइनाइट नहीं होता है। सो नाउ व्हाट वी अज्यूम, दस AO इज फाइनाइट, ओपन लूप गेन इज फाइनाइट, बट अदरवाइज ओप एम्प इज आइडियल। मतलब ये करंट तो हमको जीरो लेना है, E माइनस इक्वल्स टू जीरो एंड E प्लस इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि वैसे भी करंट माइक्रो एम्पियर में ही होता है, रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। ओके, इन दैट कंडीशन हाउ टू सॉल्व the formula to get the formula for closed loop gain? Okay, so now this is zero, but this will be not zero, this will be say minus V minus कुछ वोल्टेज होगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये वोल्टेज निकालो कितना आएगा, ये वोल्टेज कितना आएगा? Now I want the formula for open loop gain, or I want voltage V output. So I know V output is not what? V output is OAL, open loop gain, and V plus minus V minus, okay, and AOL, V plus कितना है? V plus कितना है? Zero is zero. So V plus is zero, that V minus, okay, so now my V output is minus AOL V minus, okay, so this is the first thing, okay. Now I want value of V minus, तो कैसे निकालेंगे V minus यहाँ पे बताओ? प्लस वाला जीरो कर दिया ना? हाँ, अब ग्राउंड है तो V minus कैसे निकालेंगे?
सर केसीएल लगा के सर, केसीएल लगा लो, ठीक है, केसीएल लगा लो या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा लो। यस सर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब इसको निकालना है तो इसको जीरो मान लो, जब इसको निकालना है तो इसको जीरो मान लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं, ओके, v माइनस, तो v माइनस कितना आएगा, इफ आई एम टेकिंग दिस इज ग्राउंड, इफ आई एम टेकिंग दिस ग्राउंड, सो v माइनस इज व्हाट, v1 plus v2, so because of this v input, so if this is ground, then v minus will be what, the voltage across this rf, v minus will be what, this is v minus, this is 0, so जो भी voltage यहाँ पर होगा that is v minus, so v क्या हो जाएगा, so that will be my rf upon r1 plus rf v input. Can I write it, this is my v1, okay, so v minus is equal to v1 plus v2, so v1 is what, v1 is what, rf r1 plus rf v input. ये ठीक है क्या? यस सर, यस बाकी लोग भी जाओ तो केसी निकाल, तुम केसी लगा दो v1 माइनस v अपॉन r1, फिर इसको करंट को बराबर कर दो, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सुपरपोजिशन लगा रहा हूँ, यू कैन डू इट अदर वे। नाउ दिस इज माय v1, व्हाट इज v2, v2 में क्या करेंगे, दिस इज v नॉट, ओके, नाउ दिस इज ग्राउंडेड, सो माय v2 कितना आ जाएगा मेरा, कितना आएगा v2 भाई, ये आपकी ये वोल्टेज है ना, R1 by R1 plus RF by into V output, R1 upon R1 plus RF RF into into V output, V output. so निकाल लो, अब आपके पास फॉर्मूला आ गया, ओके। सो सर V1 is voltage across R1 resistance हाँ and V2 is voltage across, हाँ, V2 किसका voltage across? V2 भी इस V2 के कारण, V नॉट के कारण यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, और फिर इसके ये V इनपुट के कारण यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है, हमने वोल्टेज निकाल लिया हमने, ठीक है। ओह, So now if you don't understand, you can apply KCLs also, okay. So let me check what I have done, okay, I have applied this one, okay. So now V naught will be RF upon R1 plus RF V input, okay, plus R1 plus RF V naught, okay. Now put the value of V minus here, this is V minus, sorry, this is V minus, so put the value here and calculate the V naught, okay. So V naught will be AOL, okay, and this is my R1 plus RF, अब कॉमन निकाल लिया मैंने, so RF V input, okay, plus R1 V naught, okay, and I need the value of V naught, so V naught क्या आ जाएगा, या माइनस भी है, ओके, सो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। V naught इक्वल टू AOL RF V infinite R1 plus RF, okay, minus AOL, okay, R1 V naught R1 plus RF, so V naught will be 1 plus AOL R1 upon R1 plus RF, okay, minus AOL RF V R1 plus RF, okay. Now we want closed loop gain, okay, that will be V naught upon V input, okay, so that will be what, minus AOL RF, okay, and this will be R1 plus RF divided by 1 plus AOL R1 plus RF, okay. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, so if you simplify this one,
A closed loop gain, okay, will be minus AOL RF. इसको सॉल्व कर देंगे तो कट जाएगा ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा R1 प्लस RF, ओके, प्लस A0 L R1, ओके, ये से कैंसिल हो जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा R1 प्लस RF, okay. Now if you divide by AOL, so my ACL will be minus RF, okay, R1 plus RF, okay, so R1 plus RF, so R1 plus R1 plus RF divided by AOL, okay. So this is the my formula. Let me check this correct or not, okay. So RF, okay, ये कैंसिल नहीं हो गया कहीं से, कैलकुलेशन चेक करना। हाँ सर, R1 प्लस RF टर्म नहीं आएगा। ये नहीं आएगा ना? हाँ हाँ, सर। क्या मिस्टेक हुई थी, मैंने क्या सर कैंसिल? ऊपर सो लेट्स चेक दिस, ओके। सो दिस इज द तो ओनली, डिनोमिनेटर में कैंसिल हो जा रहा। अच्छा हाँ, ओके ओके, कैंसिल हो गया था। तो ये दिस इज माइनस आर एफ, और नीचे कैंसिल हो गया था ना, ऊपर के लिए, ठीक है। सो दिस इज माय क्लोज लूप गेन फॉर्मूला, दिस इज द एग्जैक्ट फॉर्मूला। जो जो हमने निकाला था पहले वो आइडियल था ना। इसी फॉर्मूले में इफ यू पुट ए ऑल इनफाइनाइट, इसी फॉर्मूले में अगर इनफाइनाइट पुट कर दे या वेरी हाई पुट कर दें तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। सो योर क्लोज लूप गेन क्या आ जाएगा, माइनस आर एफ अपॉन R1, जो हमने पहले निकाला था। सो दिस इज योर एग्जैक्ट फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन में क्लोज लूप गेन इज गिवन, ओके, देन ओपन लूप गेन इज गिवन, देन यू टू यूज दिस फॉर्मूला, ओके, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट योर बी आउटपुट, और जो भी करना है वी करना है, या फिर दिस इज बी आउटपुट ना, दिस इज बी आउटपुट अपॉन बी इनपुट। और अगर नहीं दे रखा है क्लोज ओपन लूप गेन, then you to assume that it is infinite, okay. So this is very important to do the problems, okay. So let me give one problem which came in gate EC. So this you can calculate this using your KCL also, okay. जैसे भी तुमको कंफर्टेबल, जिसमें भी तुम्हारे कमांड हो गया वैसा तुम कर सकते हो इसको। Now one question is asked in exam, okay. So they have given R1 is equal to 1 kilo ohm, RF is equal to 10 kilo ohm, okay, and the closed loop gain, we are asking open loop gain AOL is 100, okay. So calculate closed loop gain CL, that is V naught upon V input, calculate, okay. तो बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करो, मैंने सॉल्व कर रहा है इसको। अब देखो फॉर्मूला याद करना जरूरी नहीं है, एक चीज आपको जब पता चल गया है कि ये इसमें ओपन जो आपका जो ओपन लूप गेन इज नॉट इनफाइनाइट, ओके, देन दिस वोल्टेज आर नॉट सेम, ओके। तो यहाँ पे यू कैन अज्यूम व्हाट इज द वोल्टेज से V1, और V1 और V माइनस जो भी करना है आपको, V1 जो भी आप अज्यूम करो, V माइनस कर दो, V प्लस कर दो, या VA VB कर दो, बस इसको सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। अब क्या है आपका ओपन लूप गेन दे रखा है, open loop gain is given means what, open loop gain is what, open loop gain is क्या होता है open loop gain, बताओ, what is open loop gain, V V output naught upon V difference. P output by V2। V difference, that is V1 minus V plus minus V minus, minus. okay. So V naught upon ये क्या है, जीरो है, V plus तो, so V minus, okay, minus V minus, okay, this is given already 100, सर -9 आ रहा है। -9 आएगा आंसर, ओके। आप चाहो तो यहाँ कैलकुलेट कर लो, या फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला यूज कर लो, जैसे भी आप कंफर्टेबल है, ओके।
अगर वैसे कैलकुलेट करना है, हाँ हाँ बोलिए। सर क्लोज लूप गेन का जो फॉर्मूला है वो तो हमें याद करना है, हाँ ACL हाँ माइनस RF R1, वो आर तो एफ, याद करना है हाँ सर। वो तो याद कर ही लो ना, 2 मिनट में निकल जाता है। अभी यहाँ से जो लगाया आपने केसी, आप जो केसीएल लगाओगे करंट का, तो वो निकल ही आता, अपने आप ही हाँ निकल जी आता है। सर। ठीक है, ओके। ये भी आसानी से निकल आएगा अभी। इसलिए आपको वी नहीं चाहिए, सुपरपोजिशन लगा दो वापस। सुपरपोजिशन लगाओगे तो क्या आएगा, सर वी, वी नॉट कितना दिया है सर? वी ने थोड़ी दे रखा है, निकालना हो तो। तो वी निकालना है ना सर? हाँ अब सॉरी वी माइनस। हाँ निकालो, फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूले में कहाँ वी आउटपुट का फॉर्मूला कहाँ पूछ रहा है? वी आउटपुट तो पूछ ही रहा है आपको। वी इनपुट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, वो भी ग्राउंडेड ही है। ठीक है, तो सपोज, सॉरी यहाँ पर वी एस दे रखा है। ओके, आई डिड मिस्टेक हियर, दिस इज वी एस गिवन, वी एस। ओके, वी इनपुट जिसको मैं बोल रहा हूँ, दैट इज वी एस इज गिवन। सो नाउ आई वांट वी माइनस। ओके, तो वी माइनस कैसा आएगा, वी एस इंटू 10 किलो ओम, ओके, देन अपॉन 1 किलो ओम प्लस 10 किलो ओम, 11 किलो ओम, ओके, 11 किलो ओम प्लस, सुपरपोजिशन लगा रहा हूं मैं, इसके कारण कितना आएगा, वी नॉट इंटू 1 किलो ओम, ओके, अपॉन 11 किलो ओम। सो दिस इज किलो ओम कैंसिल हो गया। ओके, दिस इज बिकम 10 वी एस अपॉन 11 प्लस वी नॉट अपॉन 11। ओके, now I know what is my V output. V output is my AOL into V plus minus V minus. Okay, so AOL is given 100, V plus is 0, and V minus just now we calculated this one. Okay, so this is minus 100 V minus. Okay, and minus 100, okay, V minus कितना है, 100 Vs upon 11 plus V naught upon 11. Okay, now I want V naught को उधर लेके जाओ, so बस सॉल्व करके दिखाओ कितना आ रहा है। सर इट इज 10 VS अपॉन 11 ना? हाँ हाँ हाँ, सो V naught कितना जाएगा, V naught 1 माइनस, यहाँ से आगे प्लस हो जाएगा, प्लस 100 अपॉन 11, ओके, इक्वल टू माइनस 1000 Vs upon 11. Okay, so now I want this one, V naught upon Vs, closed loop gain, that will be equal to minus 10 1000 upon 11. 111. Okay, so 11 upon कितना आएगा, 11 111 111. Okay, so ये 1000 है ना, ये 1000 जिससे 100 Yes, sir. 1000, तो कितना आएगा, 1000 माइनस 1000 अपॉन 111, कितना आ जाएगा, ये -9 आ जाएगा, -9.0 समथिंग, तो -9 आंसर इसका करेक्ट। तो आप चाहे फॉर्मूला याद रख लो, चाहे ऐसे सुपरपोजिशन लगा लो, चाहे केसी लिख दो, तो बस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको कैसे निकालना है, यू कैन फाइंड आउट आंसर। सो दिस -9 इज आंसर। और अगर इसको डायरेक्ट वैसे करेंगे तो कितना जाएगा, 10 आ जाएगा ना, माइनस RF अपॉन R1, Yes, sir. 10 आ जाएगा, 10 आंसर नहीं है, इसका आंसर -9 है। Yes, sir. Okay, so this was your inverting amplifier. Okay, now second negative feedback circuit, ये negative feedback circuit है, okay, inverting amplifier with feedback. Now we'll calculate now inverting amplifier, non-inverting amplifier. Okay, so in non-inverting amplifier, what we have, minus plus, okay,
फीडबैक तो देना ही है और फीडबैक हमेशा नेगेटिव पे देना है. दिस विल बी R1. Okay, this is my output V0 and we have feedback circuit here, RF. Okay, and then this is ground. नॉन इन्वर्टिंग में क्या हो रहा है, ये ग्राउंड है, पहले यहाँ पे इनपुट दे रहे थे, अब इनपुट कहाँ देंगे, यहाँ पे देंगे प्लस पॉजिटिव पे. वोल्टेज. यस सर. ठीक है, सो दिस इज प्लस माइनस, दिस इज ग्राउंड. ओके, एंड नाउ आई एम गिविंग V इनपुट टू नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल. तो पहले आइडियल केस निकाल लेते हैं. ओके, एंड देन विल सी प्रैक्टिकल केस. सो फर्स्ट वी टेक आइडियल केस. Ideal case, that means open loop gain is infinite. Okay, so this is my V minus, this is V plus, that means V minus is equal to V plus. Okay, और इस क्वेश्चन में आपको निकालना है, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना आ जाएगा. नॉन इन्वर्टिंग में नेगेटिव ग्राउंड में है, प्लस में वी इन लगा है ना. पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नॉन इन्वर्टिंग है ना इनपुट. हाँ हाँ, तो इनपुट नॉन इन्वर्टिंग में दिया ना हमने. ओके, मतलब प्लस में दिया है तो नॉन. हाँ हाँ, प्लस में इनपुट दिया है तो नॉन इन्वर्टिंग है. माइनस में दिया ये है तो ये इन्वर्टिंग है. फीडबैक हमेशा इन्वर्टिंग पे देंगे क्योंकि नेगेटिव फीडबैक है. ओके, अभी अभी पॉजिटिव फीडबैक पे आए नहीं, अभी हम सब नेगेटिव फीडबैक ही कर रहे हैं. तो नेगेटिव फीडबैक हमेशा यहाँ पर होगा और इनपुट यहाँ पे देंगे. ठीक है, यहाँ पे भी दे सकते हैं, तब कुछ तब कुछ और चीज होगा. ठीक है, पहले अभी अभी सिर्फ अभी खाली हम बात कर रहे हैं इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. तो अभी ये हो गया. ठीक है, सो करंट तो जीरो ही होगा इसमें, आइडियल है तो. ठीक है, वैसे भी करंट हमेशा जीरो ही लेते हैं. सो I माइनस और I प्लस बोथ आर जीरो, और IA और IB जो भी नोटेशन यूज करना हो दैट इज जीरो. ठीक है, नाउ वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला. सो यहाँ पर वोल्टेज V प्लस है. ओके, सो दिस इज कनेक्टेड टू V इनपुट, तो V प्लस कितना हो जाएगा, V प्लस इज इक्वल टू V माइनस इक्वल टू व्हाट, कितना आएगा, V input. Okay, so this is now my V input. Okay, now apply KCL here at this point. See, this is reference point A. Apply KCL. So 0 minus V input upon R1 is equal to V input minus V naught आउटपुट upon RF. RF. Okay, now calculate करो कितना आएगा. So this is, I want, this is minus V input upon R1. Okay, and minus V input upon RF is equal to minus V naught RF. Okay, so input in minus RF by R1. so RF का आ जाएगा माइनस, माइनस नहीं प्लस का ही आएगा. हाँ माइनस कर कैंसिल हो जाएगा. ओके, सो V इनपुट मैंने कैंसिल निकाल, V इनपुट कॉमन निकाल लिया. ओके, so 1 upon R1 plus 1 upon RF. Okay, so now I want V naught upon V input. Okay, that is closed loop gain and that will be RF. Okay, और ये क्या हो जाएगा, R1 plus RF upon R1 plus RF, ये कैंसिल हो जाएगा. So this will be 1 plus RF upon R1. This is closed loop formula. 1 plus RF upon R1. Okay, ये तो वेल नोन है तुमको. ठीक है, तो एक क्वेश्चन देते हैं. अब इसका क्वेश्चन तो तुमको पता ही है, इसका क्वेश्चन क्या देना, जो भी तुम फॉर्मूला लगा ही दोगे. अब निकाल लो प्रैक्टिकल का. ठीक है, ये तो है आपका आइडियल केस. आइडियल केस का मतलब क्या है, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन, ये क्लोज्ड लूप है ACL. हाँ ACL क्लोज लूप गेन. तो क्लोज तो लूप है, अगर इसको हाँ, हटा देंगे तो वो ओपन लूप हो जाएगा. ओपन लूप हो जाएगा. ओके सर. So when AOL is infinite. Now take practical case. Okay, when AOL is finite, in that case how to calculate gain.
निकाल लो जैसे पहले निकाला था, एग्जैक्टली सेम मेथड है। सो फॉर प्रैक्टिकल केस क्या करना है हमको, वी नो आवर वी नॉट इज, वी नॉट क्या होता है, AOL into V input. ए ओल इंटू V input वी प्लस माइनस minus V वी minus. माइनस। ओके, सो नाउ v प्लस v माइनस इज जीरो, v माइनस के इनपुट का पता नहीं अभी तो, ठीक है, अभी हमको निकालना है ये वाला। ओके, सो v माइनस कितना है भाई, v माइनस कितना है यहाँ पे इस केस में, सर वो v माइनस ही आएगा। v माइनस v माइनस कैसे आएगा? V पॉजिटिव पता है ना, V नहीं पता सर हमें। हाँ? हमको तो V ये minus हमें पता हमको है। साला पॉजिटिव हमको पता होगा ना सर। हमको पॉजिटिव पता है, नेगेटिव क्या आएगा? नेगेटिव क्या तो है? सर निकालना पड़ेगा निकालना पड़ेगा कि जीरो आएगा? सर। V output की वजह से भी तो कुछ आ रहा होगा। कुछ जीरो नहीं आएगा, output निकालना तो zero आएगा। निकालना पड़ेगा, ठीक है, निकालना पड़ेगा। तो दिस इज v माइनस and this is v plus. Okay, so v plus we know, so v plus is v infinite and this is v minus. Okay, so v minus निकालो कैसे सर निकालो? माइनस R1 अपॉन R1 minus V R1 नॉट से upon निकालेंगे। RF plus R1 into V output. ओके, सो मेरा जो v माइनस निकला हुआ है क्या, देखो जस्ट चेक, माइनस, ओके, निकालना पड़ेगा ना। ओके, सो v माइनस किसका आएगा, वैसे सुपरपोजिशन लगा दो पहले पहले इसका, सुपरपोजिशन लगाने से क्या होगा, if I want, if I want to because of this one I have to short this one. ओके, सो क्या हो जाएगा, ये तो जीरो, इसका मतलब जीरो हो जाएगा, सर जीरो हो जाएगा, ठीक है, और इसको शॉर्ट कर दो, इसका निकालना है तो क्या आ जाएगा मेरा R1 ओके अपॉन R1 प्लस RF इंटू V नॉट, V naught. Yes ठीक है, sir. लगा दो इसमें पुट कर दो वैल्यू V माइनस की और निकालो V नॉट कितना आ रहा है। इसको कैसे पुट किया, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट, बताना कि तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। So directly I am writing the formula for closed loop gain. Okay, that should come R1 plus RF, R1 plus R1 plus RF upon AOL. Okay, so here also I'm writing one step. Okay, so we need V output. Okay, so this is V input and V minus is R1, V naught, R1 plus RF. Okay, बस इसको उधर ले जाओ और रेशो निकाल लो, और क्या करना है। सो V नॉट विल बी 1 प्लस R1 प्लस RF, AOL भी है ना यहाँ पर, AOL। ओके, हाँ सर. हाँ, R1 प्लस RF AOL, ओके, एंड दिस इज V इनपुट AOL। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आंसर आपका। So this is your closed loop formula, okay, or V naught formula in the case of, this is what V naught upon V input, और ये V input कहाँ पे है, नॉन इन्वर्टिंग पे है। ओके, so now we have one problem, okay, which also came in gate. So हाँ सर, थोड़ा सा साइड हो जाएगी सर. हम्म, थोड़ा सा साइड हो जाएगी सर. अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ गया है,
check. Okay. So this came in problem came in exam. Okay. Gate EC. So they are asking. So they have given this RK is 2K. Okay. And this they are given 8K. Okay. And they are applying V input, something V input here, V naught. Okay. And question they are given open loop gain is 45. Very poor. The operational amplifier is a very poor. Open loop gain 45. Otherwise ideal. Otherwise ideal. Okay. So they are asking find out the closed loop gain. Find out closed loop gain. इसको find out करना है. निकालो कितना आएगा. सर भी इनपुट क्या है? 4.5 सर मतलब AOL दिया है 45 है। हाँ. 4.5 है सर। 4.5 आएगा. V इनपुट की जरूरत ही नहीं है. ठीक है ना. क्योंकि V आउटपुट पूछ नहीं रहा है, रेशियो पूछ रहा है. ठीक है. सर इसमें तो फॉर्मूला चाहिए नहीं. तो आंसर 4.5 आएगा. और वैसा निकालोगे कितना आएगा अगर इसको आइडियल मान के करोगे तो 1 + RF/R1 5 आ जाएगा. 5 आ जाएगा. ओके. सो देखो जब मैं नंबर इतना पुअर लिया तब भी कितना कम पहले 5 आ रहा है और मैंने जब ओपन लूप गेन दिया 45 लिया तो क्या होगा. तो 4.5 आ रहा है. अगर मैं इसको 10,000 ले लूं या 10⁵ ले लूं तब कितना आएगा. ऑलमोस्ट 5 आएगा. 5 आएगा. ऑलमोस्ट 5 आएगा ना. तो इसलिए जो हम कंटीजर लेते हैं ना हम लोग इनफाइनाइट इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इसका ओपन लूप गेन वैसे ही बहुत ज्यादा होता है. ओके. तो इसको इनफाइनाइट मान सकते हैं. थोड़ा सा कम करने से वो इनफाइनाइट जैसा ही रिजल्ट देता है. परफॉर्मेंस पे 4.5 आ रहा है ना. 4.5 आ रहा है. ठीक है ना. तो आपका जब जो क्लोज लूप गेन है वो ज्यादा डिपेंड नहीं करता है आपके इस पे वैल्यूज पे. अगर इनफाइनाइट लो या वेरी हाई लो. ओके. दैट्स व्हाई वी टेक दिस इज लाइक आइडियल open. Okay. So this was your inverting and non-inverting amplifier. Okay. Now we'll do one more problem. Okay. Suppose I have a amplifier plus minus. Okay. This is given 4 kilo ohm. Okay. And this is given plus minus 6 volts. And minus they given us plus minus 4 volt. This one. Here we have V naught and this is our 10 kilo ohm. Okay. So they say find out V naught. आइडियल है. कुछ नहीं बोला है तो AOL इज इनफाइनाइट. आइडियल. ओके. आइडियल मतलब V माइनस इक्वल टू V प्लस सेम लेना है. तो इसको इस क्वेश्चन में तो 2 सोर्स हैं. अभी इन्वर्टिंग भी है नॉन इन्वर्टिंग भी है. ओके. सो आइदर यू अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और यू अप्लाई KCL. ओके. सो इफ आई अप्लाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल V नॉट. ओके. सर इट इज इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग. हाँ दोनों में सिग्नल दे रखा है ना. अभी दोनों में इनपुट इन दोनों में दे रखा है. यस सर. ओके. तो अभी कैसे करोगे इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इसको करना है तो इसको शॉर्ट कर दो. ये 0 कर दो तो ये क्या हो जाएगा. मतलब ग्राउंड कर दो इसको. हाँ 0 कर दो तो ये खाली इन्वर्टिंग हो जाएगा. तो कितना Yes, जाएगा. sir. इन्वर्टिंग का फॉर्मूला क्या है. माइनस RF अपॉन 10 अपॉन 4 किलो ओम. ओके. इनटू इनपुट कितना है 10 किलो ओम 4 किलो ओम. इनपुट इज 6 वोल्ट्स. ओके. अगर इसको ग्राउंड कर रहे हैं तो. एंड सेकंड केस सर
हाँ बोलो। इन्वर्टिंग वाला इन तो 4 वोल्ट है ना? इन्वर्टिंग में 4 है, सॉरी, इन्वर्टिंग में 4 है। तो हमने इसको नॉन इन्वर्टिंग पे दे दी क्या सिग्नल को? नहीं, उल्टा खींचा मैंने ये उल्टा करा है ना। ये तो फीडबैक तो हमेशा नेगेटिव पे होगा, ठीक है। हाँ ओके, ये ध्यान रखना, अभी नेगेटिव पे होगा ये सब। पॉजिटिव की एप्लीकेशन एकदम अलग है। दिस 6, और जब इसको फीडबैक हमेशा नेगेटिव पे ही होता है ना? पॉजिटिव पे होता है उसका, वो अच्छा, एकदम डिफरेंट है, वो बाद में बात करेंगे, लास्ट में करेंगे जब करेंगे, ठीक है। ओके सर। अभी हम इसी सर्किट की बात कर रहे हैं। प्लस अगर इसको 0 कर दो तो ये आपका क्या बन गया? नॉन इन्वर्टिंग बन गया। और नॉन इन्वर्टिंग का फॉर्मूला क्या है? 1 + 1 + RF 10 किलो ओम अपॉन 4 किलो ओम, ओके, इनटू इनपुट 4। तो कितना आ जाएगा ये? 2 5 किलो ओम कट गया 3, सो -15, ओके। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14, सो -1 वोल्ट आ गया, -1 ओके। और केसीएल से तो एक ही लाइन में हो जाएगा भी। अगर केसीएल लगाओगे, ये आइडियल है, ये 4 है, तो यहाँ पे भी 4 आ गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? 6 - 4 अपॉन 4 किलो ओम इज इक्वल टू 4 - V0 अपॉन 10 किलो ओम। कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? 2, इज बिकम 2 अपॉन 4, ओके। 4 - V0 अपॉन 10, सो इज 1 2, ओके, दिस 5। तो कितना आ जाएगा? दिस implies 4 - V0 equal to 5, so V0 equal to 4 - 5, this is -1 वोल्ट। तो इसलिए वो ज्यादा आसान है निकालना। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। so now we'll do summing amplifier, okay, because op-amp is used for mathematical operation, so summing amplifier कैसे यूज करेंगे? summing amplifier, okay. So suppose I have a into page G minus V plus, okay, and this one we have R1, R2, R3, okay. So R1, R2, R3, they are given V1, V2, V3, okay, and this is from here we have a feedback, okay, this is RF, okay, and this is grounded, okay, V0। तो कैलकुलेट करो V0 कितना आएगा? So if I want to calculate V0, okay, this is grounded, ideal, grounded hai, okay, this is also grounded. So now suppose this current is I, so this current will be also I. So I is what? I is what? See, this is I1, I2, I3. So I equal to I1 plus I2 plus I3. Now what is I1? V1 minus 0. V1 by R1 So V1 by R1, V2 by R2 plus V3 by R3. Okay. So this is my I, and this is what? This is also I. 0 minus, this should be equal to what? 0 minus V0 upon RF. Okay. So my V0 will be what? My V0 will be what? Minus RF. Okay. V1 upon R1 plus V2 upon R2 plus V3 upon R3. And this will be equal to what? Minus RF upon R1 V1 minus RF upon R2 V2 minus RF upon R3 V3। तो बस जैसे सुपरपोजिशन लगा दिया, पहले इसके क्या निकालना है, तो इन दोनों को जीरो, इसको इनको जीरो मान लिया, तो क्या आ गया? माइनस R1 अपॉन RF माइनस RF अपॉन R1 V1 आ गया। फिर सेकंड केस में क्या किया? इन दोनों को जीरो कर दिया, इसके कारण निकाला तो माइनस RF अपॉन R2 V2 आ गया। एंड देन इफ यू V3 का निकालना है तो इन दोनों को जीरो कर दिया, एंड इफ यू कैलकुलेट इट विल बी माइनस RF अपॉन R3 V3। ओके, सो दिस इज योर
summing amplifier. Okay. क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। बता दो उसको। हाँ सर। माइनस प्लस है 5 किलो ओम, 2.5 kilo ohm. Okay, this is connected with 2 volt. Okay, this is connected with 1 volt. Okay, and this is going to minus, and plus is grounded. Okay, and here we have one 10 kilo ohm resistance. Okay, and here we have, this is grounded, this is grounded. Okay, इसको भी ग्राउंड कर दो सीधे, ड्रॉ कर लिया है तो क्या दिक्कत है। This is grounded and this is 2 kilo ohm. This is V naught. So he's asking find V naught. V naught कितना है? And asking what is I naught. Okay, because this is inverting amplifier. जो वोल्टेज आएगा यहाँ पे रिवर्स करके आएगा, ओके, माइनस आएगा, तो करंट क्या है हमेशा इन्वर्टिंग में, यहाँ से निकल के ऊपर जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा, ठीक है। सो ये आस्किंग व्हाट इज आई नॉट, फर्स्ट कैलकुलेट वी नॉट एंड देन कैलकुलेट आई नॉट। सर इसमें फीडबैक हुआ है ना? फीडबैक तो हुआ है ना, दो लगे हुए हैं, क्योंकि आउटपुट को निकाल RF लगा हुआ है, क्लोज हो गया, अगर क्लोज हो गया वो सर्किट में, तुम इसको देखिए, घबराया मत करो, बस ये देख लो कि यहाँ से आके क्लोज हुआ है कि नहीं हुआ है, तो ये आपका क्लोज लूप गेन, क्लोज लूप है, तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस दे रखा है ना। यस सर। ठीक है, सो नाउ यू कैन अप्लाई व्हाट सुपरपोजिशन, प्लस वाला ग्राउंड में है। प्लस वाला ग्राउंड में है। यस ठीक है, सर। समिंग एम्पलीफायर में प्लस वाला ग्राउंड में तो होता है। ठीक है, सो ये क्या है, -8 volt V output sir. सो Sir, V naught equal to -4.4 volt. वी नॉट कैसे आएगा, निकालो अच्छे से, वी नॉट कैसे आएगा, देखो वी नॉट सम करो पहले, माइनस RF अपॉन R1, Sir, -1.3 volt. 10 kilo ohm upon 5 kilo ohm, okay, into what, we input is 2 volts, okay, then minus 10 kilo ohm upon 5 kilo ohm into 1, Sir, 2.5 है into sir. 2.5 सर, ये सेकंड टर्म इन्वर्टिंग पे तो है, एक बार 2 लगा रहे हैं, एक बार 1 लगा रहे हैं, 2.5 भी है ना। 2.5, अच्छा, हाँ, 2.5 okay, RF upon this is 2.5, okay, so this become what, 2 minus 4, So minus okay, 8 volt. so Minus this 8 is, volt. so minus 4, minus 8 volt, okay, this is V naught, okay, this is V naught value. What is I naught? So say this is I1, say this is I2, so now you know what is I naught equal to I1 plus I2, okay, I1 is what, I1 is this V naught minus this is what, 0, so I1 is minus 8, -4.8 amp. 10 kilo ohm, ठीक है, and I2 is what, I2 is here it is minus 8 volt V naught, -8 upon 5. minus 8 upon 2 2. kilo ohm, 2 kilo ohm, okay, this become minus 4 milliampere, और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस 0.8 milliampere, टोटल करंट कितना हो जाएगा, -4, 4.8 milliampere. 4.8 milliampere आ जाएगा आंसर। ओके, Yes sir. सो बस वी आर स्टॉपिंग हियर, ज़्यादा करेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा, ओके,
So we'll start tomorrow. Thank you. Thank you, sir. सर हाँ बोलिए. सर ये 2 किलो ओम I1 का फीडबैक पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? भैया आउटपुट तो कहीं ना कहीं तो लोगे ना. ये तो आउटपुट ग्राउंड रहे. आउटपुट अगर आउटपुट तो कहीं ना कहीं लोगे ना लोड पे. ओके, या तो ऊपर में लो, सीआरओ को यहाँ पे लेकर सीधे सीधे लेकर जाओ ग्राउंड से, या फिर किसी रेजिस्टेंस पे लो. सर हम सर ये जो 2 किलो ओम है वो हाँ. सर 10 किलो ओम के साथ पैरेलल नहीं होगा? नहीं नहीं वो नहीं होगा. उससे नहीं जुड़ेगा वो. ठीक है, यहाँ पे भी तो सर्किट है. यहाँ पे भी तो सर्किट है. ठीक है, यहाँ पे भी तो सर्किट है. वो इस पे ऐड नहीं होगा. ठीक है, हमारा अभी हमको तो वी नॉट, हमको यहाँ वी नॉट मिल रहा है. ठीक है, ये वी नॉट से हम वी नॉट का फीडबैक तो वी नॉट से दे रहे हैं ना हम लोग, इससे नहीं दे रहे हैं. ठीक है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल आ रहा है उसको लेके दे रहे हैं हम लोग इसको. ठीक है. अच्छा सर 5 और 2.5 रेजिस्टेंस सीरीज में होगा कि पैरेलल होगा? भाई ये तो इसके तो सीरीज में ही है. अच्छा, हम तो और सुपरपोजिशन, इंडिविजुअली उससे क्या इससे तो मतलब ही नहीं है हमको. इससे क्या मतलब है हमको? अच्छा तो ये हम इनपुट लगा रहे हैं अलग अलग. अच्छा अच्छा सर, ओके ठीक सर. है, तो बस खाली केसी लगाओ ना. ठीक है, यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ से करंट, यहाँ से जो करंट आ रहा है, यहाँ से करंट आ रहा है, वो टोटल करंट यहाँ पे जाएगा. तो केसी लगा करो. ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो केसी लगा करो. ये तो मैं सुपरपोजिशन से किया है. तुम डायरेक्ट करंट बना के करो. से दिस इज I1, दिस इज I2, दिस इज I, इससे करो. ठीक है, ऐसे बना के करो तुम, उससे भी आएगा आंसर. सर आपने जो I1 निकाला वो थोड़ा बताइए ना. I1, wait, this is I1, हाँ, this is V0 minus 0. ओके सर. Okay, this resistance, this is Ohm's law, V0 minus 0. So कितना हो गया? minus at minus 0, I2 V0 minus 0 upon 2 kilo ohm minus 4 million. ओके सर, ये सर क्लियर. Okay. Thank you, sir. Okay, Thank you, sir. Thank you.